हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और फिनिश करने वाले हैं मॉड्यूल बी। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन विद योर स्टडीज विद एवरीथिंग। ओके, so now guys, just after this only two module will be remaining, module C and D, and the additional study material from your module E also, right? So like tomorrow we'll talk about module C। बहुत छोटे हैं आपका module C and D, ठीक है। So सबसे बड़ा जो module था आपका module B, that we are going to complete in this particular session, right? So everyone, those who are watching live, please quickly join in and do mention into the comment section so we can start our today's discussion, right? So guys, today's discussion will be around these particular areas. So remittance product, digitalization of retail banking, role of AI and recovery, MIS and securitization. So these are the areas which we are going to cover up in this particular session, ठीक है। we already are done with the remaining one, ठीक है। so जो पिछले आपके एरियाज हैं उन पे हमने आपका ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। एंड पीडीएफ्स, इफ यू टू आस्क मी द पीडीएफ्स, तो टेलीग्राम में भी आपका पीडीएफ्स अपडेट कर दिए हैं अभी तक के जितने सेशन हुए हैं। तो दिशा मैम विल ऑल्सो शेयर, लाइक दिशा मैम का भी मॉड्यूल बी हो गया है, ठीक है। कल मॉड्यूल सी, परसों डी आपका हो जाएगा। तो सेम सीक्वेंस में पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। यूजुअली वी ट्राई वी अलाइन, लाइक वी ट्राई टू अलाइन थिंग्स, ठीक है। कई बार आपका जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आगे पीछे हो जाते हैं, बट यूजुअली वी जनरली ट्राई कि आपको पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाए। यहाँ पे भी हम लोग आपका कॉन्सेप्ट्स एंड जो एमसीक्यूज या केसेस हैं उनका मिक्स आपका लेके चलते हैं, ठीक है। सो गाइज, टुडे वी विल स्टार्ट विद द रेमिटेंस प्रोडक्ट, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट देन? एक बार जल्दी से आपका हेलो हाई कर दे, ठीक है। एंड हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हो गए हैं और वीकेंड भी आपका था, तो काफी ज्यादा लाइक हमारा जो मेरा खुद का जो प्लान था कि लाइक एटलीस्ट मॉड्यूल सी तक आज कवर कर लेंगे, बट एक मॉड्यूल हमारा रह गया, बट दैट इज कंटेंट इज डन फ्रॉम माय साइड। तो कल हम लोग आपका उस मॉड्यूल को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें गाइस, शैल वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन दी LRS स्कीम, ठीक है। LRS आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा IN IFS के ऊपर, तो हमने काफी ज्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन किया था, ठीक है। So this scheme is generally for individuals including minors and it is not for corporate houses, HUF and others, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था आपका, ठीक है। और IN IFS के अंदर भी बहुत बार ये पूछा गया था, ठीक है। सो दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई के द्वारा ये स्कीम आपका लेके आया गया था कौन से ईयर में? February 4th 2004 आपका, ठीक है। 4th of February 2004, ठीक है। सो इनिशियल लिमिट वाज हाउ मच? आपका फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लिमिट करें तो इट वाज $25,000 इनिशियली, ठीक है, जब इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था। तो टाइम टू टाइम बेसिस पे इसको रिवाइज किया गया एंड एज ऑफ नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट लिमिट, so it is $250,000, ठीक है। So individuals they can use this particular scheme for remittances, money abroad, ठीक है। तो जैसे अगर आपको फॉरेन में पैसा ट्रांसफर करना है फॉर करंट अकाउंट पर्पसेस और एज वेल एज कैपिटल अकाउंट पर्पसेस, ठीक है, तो उसके लिए आप इस स्कीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट अकाउंट विच इंक्लूड लाइक ट्रेवल, मेडिकल और education expenses and all. Capital is basically investment. So per pen number आपका the limit is right now $250,000 per financial year, ठीक है। And it is a subject matter of TDS deduction also, TCS आपका, सॉरी, ठीक है, tax collection at source, and the amount is, the threshold limit is how much? 7 lakh rupees. So 4th of February 2004 launched by RBI, initial limit 25,000 and right now it is 2,50,000, and this scheme can be used by the individual and only by individuals, including minors, and the purpose can be आपका कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which of the following information is not required to initiate NEFT transaction? तो NEFT के संबंध में इनिशियल क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो जब हम लोग दोबारा से आपका, ठीक है, लाइक वंस वी विल डन विद दिस यूनिट वाइज आपका प्रैक्टिस,
I'll come up with again आपका मॉड्यूल वाइज मैराथन सेशन, तो वहां पे हम लोग मिक्स क्वेश्चन एंड विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो, ठीक है। जो टफर साइड का अगर पेपर बनाते तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। So the question is, which is not part of NEFT, like whenever we do the NEFT things, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपका जब होता है, सो विच इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर दिस वन, ठीक है। सो एन अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड IFSC कोड आपका, इट इज मस्ट, अमाउंट टू बी ट्रांसफर, ठीक है, एंड बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर इज नॉट नेसेसरी इन दिस पर्टिकुलर केस, सो डी विल बी राइट आंसर for this particular one. Okay, so now we'll quickly go through the highlights, जो एटलीस्ट जो कंटेंट थोड़ा सा आपको देखना होगा, प्रोसेस एंड अदर्स, वो थोड़ा सा हम लोग एक बार जल्दी से आपका रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ चार्जेस। अब एनईएफटी में अगर आप चार्जेस की बात करते हैं, सो ये काफी बार पूछा भी आता है, ठीक है। कैन बी लिवाइड ऑन दी कस्टमर एनईएफटी इज गिवन बिलो, जैसे इनवर्ड रेमिटेंसेस, अगर कोई इनवर्ड रेमिटेंसेस है, जैसे अगर हमारे अकाउंट में कोई आपका एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर करा है, सो देयर विल बी नो चार्जेस, ठीक है। सो द इनवर्ड ट्रांजैक्शन एट डेस्टिनेशन बैंक ब्रांच फॉर द क्रेडिट बेनिफिशियरी अकाउंट फी, देयर इज नो चार्जेस टू बी लिवाइड ऑन बेनिफिशियरीज, ठीक है। आउटवर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आउटवर्ड ट्रांजैक्शन एट आउटगोइंग ब्रांच बैंक ब्रांचेस, ठीक है, originating बैंक ब्रांचेस फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 10,000 नॉट एक्सीडिंग 2.5 रुपीज, ₹2.5 प्लस जीएसटी, एंड जीएसटी का कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा, इट इज 18%, ठीक है। सेकंड वन, ट्रांजैक्शन अबव 10,000 टू 1 लाख आपका ₹5 प्लस जीएसटी, 1 लाख टू 2 लाख आपका ₹15 प्लस जीएसटी, ठीक है। फॉर ट्रांजैक्शन अबव 2 लाख नॉट एक्सीडिंग 25 रुपीज, ठीक है। सो इट इज, अब ये जो ₹5 होगा, ₹15 होगा, ₹25 होगा, कितना होगा, या 25 होगा या 20 होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द बैंक इटसेल्फ, राइट। So however, with effective from 1st January 2020, RBI has removed all applicable charges on NEFT transactions initiated online by internet or mobile banking portal by saving account holders with a view to promote digital transactions, ठीक है। तो अगर हम बैंक ब्रांचेस के थ्रू आपका NEFT कर रहे हैं तो ये अभी भी लगते हैं, बट अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपका by using mobile phones or mobile banking or internet banking, so after this particular date these charges got कहीं ना कहीं आपका इन सब चार्जेस को आपका हटा दिया गया, ठीक है। RBI had fixed timing during which NEFT transaction could be processed only between 8 AM to 6:30 PM. Now we have to erase this statement, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इट इज 24/7, ठीक है। अच्छा, ऑन सैटरडेज लिखा है, सॉरी, I'll erase this particular part, ठीक है। So I thought कि it is about the overall the normal timing, ठीक है। So the normal timing is आपका, it is now become 24/7, ठीक है। So you can remit money anytime, ठीक है। There are 48 half hourly batches every day आपका, ठीक है। तो इसमें आपका 24 hours के अंदर 48 बैचेस के अंदर आपका बेसिकली इट इज आपका जो सेटलमेंट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन नेट सेटलमेंट, ठीक है। जैसे एक आधे घंटे में जो ट्रांजेक्शन है वो एक साथ सेटल होते हैं, देन आधे घंटे में, देन आधे घंटे में, बट यूजर दे जनरली फील इट लाइक रियल टाइम ट्रांजेक्शन जैसे आरटीजीएस में होते हैं, ठीक है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका कहीं ना कहीं रुकता भी है, सो द सेटलमेंट टर्न अराउंड टाइम इज 24 आवर्स, ठीक है। सो उससे ज्यादा वो आपका ऑन एयर नहीं रहेगा, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स विच इज अबाउट द NEFT transaction charges and all, so please do take care about this. प्रोसेस फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो NEFT प्रोसेस फ्लो, फर्स्ट वन इज सेंडिंग बैंक, देन सेंडिंग सर्विस सेंटर, देन NEFT क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड बेनिफिशियरी ब्रांच, ठीक है। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ द NEFT ट्रांजेक्शन। तो NEFT ट्रांजेक्शन अगर कभी होता है दो अकाउंट के बीच में, सो 5 आपका, पहला सेंडिंग बैंक आपका, देन सेंडिंग बैंक का सर्विस सेंटर, ठीक है, NEFT क्लियरिंग सेंटर, देन वी हैव रिसीविंग बैंक सर्विस सेंटर एंड रिसीविंग बैंक, ठीक है, या बेनिफिशियरी ब्रांच आपका जो भी है उसके केस में आपका, ठीक है। Advantages very common one, ठीक है। So NEFT may advantages over the other mode of fund transfer, such as the remitter need not send the physical check or demand draft. The beneficiary need not visit his or her bank for depositing the paper instruments. Beneficiary need not to apprehensive of loss or theft of physical instrument or likelihood of fraud in others.
cost effective, ठीक है, credit confirmation of the remittance sent by the masses or email, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, ठीक है, remitter can initiate the remittances from his home place working in others, ठीक है, near real time transfer of the funds to beneficiary account in a secure manner. NEFT is available 24/7, ठीक है, 365 days with effective from 16th of January 2019. NEFT available 24/7, 365 days for online NEFT transaction initiated by internet mobile banking portal for saving accounts holders, free of charge from 1st of July 2028 सर, ठीक है. सो दीज आर सम स्टेटमेंट्स. देखो अब ये स्टेटमेंट आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये आसान है, बट ये कई बार ना ये स्टेटमेंट वो आपको एग्जामिनेशन में दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपका इनको चेंज करके. सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस. तो रिवीजन में थोड़ा सा इनको रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन आरटीजीएस के बारे में, ठीक है. Which of the following statement about RTGS is true or accurate? ठीक है, RTGS transfers are settled in batches at a specific interval. So this is not about RTGS. If it is NEFT, ये आपका किसके बारे में है? NEFT के बारे में, जहां पे 48 बैचेस आपका जैसे हापाली बेसिस पे जो चलते हैं, ठीक है. RTGS allow for immediate transfer of funds in real time basis. This is true. There is a maximum transactions limit of 10,000. As is, there is no maximum limit as per RTGS things. RTGS can be used for both domestic and international fund transfer. Usually it is for domestic only. It is not for the international one. So option B will be right answer for this particular question. Right? चलो जल्दी से आपका statement को देख लेते हैं. So process flows RTGS के केस में आपका, ठीक है. So remittances and fund transfer through RTGS are transmitted through a series of process input and travel from the customer end to beneficiary end, ठीक है. Same चीज आपका. The remittances are communicated through a structured masses process and settlement for the messaging is made on a gross basis. From the liquidity maintained by the sender banks with the settlement banks, ठीक है. ग्रॉस बेसिस बेस आपका 1-to-1 सेटलमेंट्स आपका जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है. इन केस ऑफ एनईएफटी वी हैव नेटेड सेटलमेंट्स, ठीक है, नेट सेटलमेंट्स वहां पे होते हैं. ये इट इज आपका ग्रॉस सेटलमेंट बेस, 1-to-1 सेटलमेंट्स आपका, ठीक है. The remittances are credited on a dynamic basis and settlement also made on a dynamic basis. That is masses communication remittances credit and settlement for credit are done immediately subject to the system and procedures prescribed for the remittances through RTGS, ठीक है. जैसे NEFT में हमारे जो ट्रांजेक्शन है they can be on years, जैसे अगर बेनिफिशियरी के उसमें कुछ प्रॉब्लम है या अदर्स है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है. अगर प्रॉब्लम है तो सेम टाइम वो आपका फेलियर का आ जाएगा, अदरवाइज इट विल गेट क्रेडिटेड इन बेनिफिशियरीज अकाउंट, ठीक है. सो आपका the procedure for the remittance through the RTGS is, these are the 4 steps in this particular one. पहला, the transaction carried out by RTGS are interbank transaction and customer payment transactions and delivery versus payment transactions, ठीक है. So आपका interbank समझते हैं, customer payments आपका जो यूज किया जाता है, delivery versus payments आपका these are generally used in settlement process, ठीक है. So delivery versus payment आपका कहाँ पे होता है, जैसे जो सेटलमेंट, जैसे लेट्स से अगर आपने कोई शेयर्स परचेज किए हैं या कोई आपका कमोडिटी परचेज किया है, तो वहां पे लाइक हमेशा क्या होगा, जैसे मतलब सेटलमेंट इज बेसिकली सेम टाइम 2 अकाउंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है. एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है, तो जो आपका बायर है उसको डिलीवरी मिली है एंड सेलर को आपका उसका पैसा मिला, ठीक है. दिस इज द वन. Interbank transactions are used to settle the participants' bank financial obligation on their own accounts. Customer payment transactions in customer information along with the payment masses can be transmitted in this structure format. Delivery versus payment transaction will be arise out of RBI securities settlement system and is settled in RTGS as a separate transaction. So please do remember these 3 also. तो ये कई बार वो आपको पूछ लेता है किस तरीके से आपका ये वर्क करते हैं, ठीक है. So with a view of rationalize the service charges levied by the bank for offering fund transfer through RTGS system, a broad framework of charges
has been mandated as under, जैसे इनवर्ड आपका there is no charges will be levied, ठीक है। इनवर्ड मींस आपका जो रिसीवर है, जो क्रेडिटर आपका है, उसको कोई चार्ज नहीं पे करना होगा। आउटवर्ड आपका ट्रांजेक्शन, if our account is getting debited and we are using RTGS, in that case 2 to 5 lakh not exceeding 24.50 plus GST आपका, ठीक है। So GST is again 18%, ठीक है। above 5% आपका, सॉरी above 5 lakh rupees not exceeding 49.50 आपका प्लस GST, ठीक है। सो for 24.50 plus GST, 49.50 plus GST. This is the maximum amount that bank can levy, ठीक है। So अब ये हो सकता है like they can charge 30 rupees, 25 rupees or others. So that is up to bank itself, ठीक है। But यहाँ पे जो मैक्सिमम है आपका that is provided by RBI itself, right? चलो next question guys. Which of the following best describe the ECS credit facility? This is like ECS is one of the most important part from this particular unit. रेमिटेंसेस में देखो ECS का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अगर हमें आपका एम्प्लॉइज की सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, तो अब एक एक करके तो हम ढूंढेंगे नहीं, तो वो ECS सिस्टम के अंदर फीड होते हैं, ठीक है। एंड जो आपका लाइक बेसिकली देयर आर काइंड ऑफ प्री कमांड इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शंस आपका उसी तरीके से फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये ECS आपका जैसे आपका रीजनल है, लोकल है और आपका नेशनल लेवल पे, देयर आर 3 टाइप ऑफ ECS। लोकल इज लाइक बेसिक लिमिटेड अप टू अ स्टेट। इसके अलावा अगर हम रीजनल की बात करें विच कैटर और रीजन, एंड आपका नेशनल पूरे कंट्री भर के अंदर, ठीक है। तो जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं दैट इज आपका नेशनल विल बी हेल्पफुल, या फिर आपका जो जैसे कोई छोटी कंपनी है उसके लिए आपका लोकल विल वर्क, ठीक है। अगर वहां पे जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके उसी पर्टिकुलर रीजन में, तो या कोई ऐसा पेमेंट्स या अदर्स जो भी आपके रहेंगे, ठीक है। आपका ओके रुपेंद्र सर एंड सुल्तानसु सर इज सेइंग ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर एंड समवन इज सेइंग ऑप्शन ए। So best describe the ECS credit facility. It is used to debit funds from a customer's account. It facilitate bulk payment transactions such as salaries and dividends. It allow the for real time fund transfer. It restrict the government for payments only. तो क्या होना चाहिए था इसका आंसर? आपका बी होना चाहिए था आंसर इसका। यस, हाँ, पारस सर ने आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। सो ECS इज जनरली यूज फॉर द बल्क ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना सैलरीज का, या आपका जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, पूरे मतलब जो भी उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है, या आपको कोई भी ऐसी फैसिलिटी आपका दी जा रही है, सो दैट इज डन थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, राइट। चलो नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ECS डेबिट इज ट्रू? ओके, अच्छा ओके, चलो इट इज अबाउट द ECS डेबिट, ठीक है। सो इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट्स. It required the prior consent of the account holders for automatic deductions. It process transactions in real time basis. It is not suitable for utility bill payment. It is suitable for utility bill payment also. जैसे होता है ना ऑटो पे आपका, इट इज काइंड ऑफ ऑटो पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आपका, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ECS आपका जैसे EMI पेमेंट्स होती हैं या अदर्स सैलरीज का पेमेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अदर्स, ठीक है। सो इन विच सिचुएशन आपका, अगर हम इनमें से सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट की बात करते हैं, सो व्हाट शुड बी योर राइट आंसर? इट रिक्वायर प्रायर कंसेंट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स फॉर ऑटोमेटिक डिडक्शंस। आपका होता है ना, जैसे मतलब इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑटो पे, जैसे फोन पे या अदर्स इनमें हम लोग करते हैं, तो ECS हम लोग साइन करवाते हैं कस्टमर से एट द टाइम ऑफ लोन डिसबर्समेंट इन अदर्स, तो जिससे उसके अकाउंट से आपका टाइमली बेसिस पे पैसा आपका डिडक्ट होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन, What is key characteristics of regional ECS? So regional ECS, so local, regional, national, ठीक है, ये 3 टाइप आपको ECS के मिलेंगे, and based on these 3 types you can expect 1 marks question in your upcoming examination, or 1 question at least, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको केस बना करके भी दे सकता है, उनको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आपको दे सकता है, या डिफरेंसेस आपको दे सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो इट प्रोसेस पेमेंट एंड कलेक्शन विद इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ कंट्री. इट लिमिटेड टू अ सिंगल बैंक ब्रांच. It support only cash transaction. It is primarily used for international remittances. So what will be your correct answer? So regional, which is limited up to a region. ठीक है. Local आपका जैसे state level पे,
रीजनल आपका 2-3 स्टेट का आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर आपका नेशनल की बात करेंगे तो थ्रू आउट दी कंट्री। तो यहां से दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, एक बार थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है। So based on the geographical location of branches covered, there are three broad categories of ECS scheme. ठीक है, local ECS, regional, local ECS, we have regional ECS, and we have national ECS. ठीक है, National Automated Clearing House (NACS) is also one of the form of ECS system offered by NPCI. ठीक है, तो NACS का काम ही ये होता है, देखो बल्क जो ट्रांजेक्शन है उनको हैंडल करना, और आज की डेट में मोस्ट ऑफ चीजें आपका NACS के थ्रू ही आपका ड्रिवन होती हैं. So if we talk about the local ECS, please read carefully or listen carefully. It is operating at 81 centers location across the country. At each of these ECS center, the branch coverage is restricted to a geographical coverage of the clearinghouse, generally covering one city or one satellite town, and suburbs adjoining the city. These are operated either by RBI or a designated bank itself. ठीक है, second one आपका regional. If you talk about it, operate at 9 centers and locations at various part of the country. Regional ECS facilitate the coverage of all core banking enabled branches in a state or a group of state, and can be used by institutions desirous of reaching beneficiaries within the state or group of state. These are operated by RBI itself. Again, National ECS is the centralized version of ECS. The scheme is operated at Mumbai and facilitate the coverage of all the core banking enabled branches located anywhere in the country. The system to take advantages of the core banking system in banks, and this is purely administered by RBI. Please do remember these three line also. RBI, and this is RBI plus bank आपका, ठीक है. So these are the one. Here we have 81 numbers. Here we have 9, and here this is the central level आपका, जो कहां से ऑपरेट होता है आपका इफिटास मुंबई से आपका जो कहीं ना कहीं पूरा हैंडल होता है, ठीक है. So based on these particular things, this is very important one guys. Please do remember this and do revise this. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर. तो पहला क्वेश्चन आपका एक बार जल्दी से देखिए. So what will be a correct answer? For which type of transaction would local ECS be most suitable? ठीक है, so out of the given 4 areas, तो कौन सा उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल होगा? नेशन वाइड सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका नेशनल चलेगा. लोकल यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, इंटरनेशनल नो. स्टेट वाइज लोन रीपेमेंट्स, ठीक है. सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. नेक्स्ट वन, which category of ECS would you choose for making a monthly salary payment to employees located in different state? ठीक है, so आपका monthly salary payment to employees located in different state आपका, ठीक है. अब देखो यहाँ पे चलो जैसे कोई कंपनी है आपका जिसमें जनरली उसके जो एम्प्लॉइज हैं दे आर लाइक जैसे उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, दे आर रिलीजिंग देयर सैलरी फ्रॉम द हेड ऑफिस, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा आपका, अच्छा ओके बताओ कौन से उसमें आप जाएंगे इसमें, ठीक है. सो रीजनल आपका कुछ कह रहे हैं, रुपेंद्र सर इज सेइंग रीजनल ECS एंड अदर आपका, ठीक है. इट कैन बी रीजनल और वैसे आपका नेशनल भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ठीक है. सो वी विल, हाँ जैसे किसने लिखा है सी आपका पारस सर ने लिखा है, ठीक है. सो इट कैन बी रीजनल और इट कैन बी नेशनल, ठीक है. ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है आपका. अगर वो मेंशन कर देते देयर आर इन फ्यू स्टेट या 3 स्टेट या 4 स्टेट इन पर्टिकुलर एरिया इन अदर्स, तो आपका ज्यादा होता है, ठीक है. सो नेशनल आप देखो यहाँ पे ना उसने कुछ ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, तो इन्होंने देखो आंसर बिल्कुल सही किया, जस्टिफाई कर रहा है हमारे उसको, ठीक है. सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. इफ दे हैव मेंशन की लाइक एक पर्टिकुलर रीजन आपका या ग्रुप ऑफ 3 स्टेट और 4 स्टेट, तो उसके लिए हम लोग वी कैन एक्सेस थ्रू द योर रीजनल ECS, अदरवाइज दिस, ठीक है, दिस इज द वन, ठीक है. तो प्लीज ऐसे मतलब जो एरियाज है उनको भी ध्यान रखिए. In which scenario would national ECS will be particularly advantageous? So a company paying utility bill in one city, a national bank distributing interest payments to account holders across India, a single branch making cash withdrawals,
रीजनल ऑफिस प्रोसेसिंग पेमेंट फॉर लोकल वेंडर्स, ठीक है। आप जैसे ये वाला था ना, आपका ये रीजनल ईसीएस का अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज द वन जो आपको रीजनल, आपका जो RECS है, ठीक है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके लिए ये, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस केस में क्या होगा आंसर, रुपेन सर बताइए, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। सो अ नेशनल बैंक डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स टू अकाउंट होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री, आपका, ठीक है। जैसे जो बैंक के द्वारा जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस आपके होते हैं, दैट कैन बी थ्रू दिस, ठीक है। फॉर अ कंपनी कंडक्टिंग बिजनेस इन अ स्पेसिफिक रीजन and needing to process bulk payment, which ECS category is this, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया स्पेसिफिक रीजन आपका, सो वी विल गो विद द रीजनल ECS आपको। तो मतलब अगर कहने का मतलब ये है, अगर वो आपको चाहेगा रीजनल वाले का क्वेश्चन पिक करना, सो दे डेफिनेटली गिव सम काइंड ऑफ हिंट आपका, ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ स्टेट, 2-3 स्टेट, या आपका जिस तरीके से जो हमने पिछले 2-3 एग्जांपल्स में देखे हैं, ठीक है। समझ में आया, चलो अगला। Which type of ECS is best suited for recurring payments across multiple state? So recurring payment multiple state, तो again we'll go with the आपका national ECS, ठीक है। So जैसे recurring payment multiple state आपका like जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, या आपका सैलरीज हो, या अदर चीज आपके हो, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चन आपका अब हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे मैकमिलन बुक के, तो एक बार जल्दी से इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ NEFT सिस्टम आर, तो NEFT सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है। तो पहला, to establish an electronic fund transfer system to facilitate an efficient, secure, economical, reliable and expeditious system of fund transfer and clearing in the banking system throughout India, to relieve the stress on existing paper-based fund transfer and clearing system। तो क्या होगा आंसर, पहले का आंसर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। RTGS के फीचर्स आपका, ठीक है। So remittances and fund transfer are transmitted through a series of process input and travel from the customer end to beneficiary end, ठीक है, बिल्कुल सही। Remittances are communicated through a structured messaging process to settlement for messages is made on gross basis, ठीक है। Liquidity maintained by the sender banks, true। Remittances are credited on a dynamic basis and settlement also made based on the dynamic basis, तो E should be right answer for this। अगला ECS payments के ऊपर क्वेश्चन है आपका, advantages of ECS payment, ठीक है। So no need for issuing any check for the beneficiary, ठीक है। तो ECS में चेक वेक की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पेमेंट डिफॉल्ट विल नॉट हैपन इफ देयर इज सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट, ट्रू। No follow up needed by the beneficiary as payment will be received automatically based on mandate obtained, hassle free for the mandate issuer as it save his time of issuing check for each payments and others। तो अगेन आपका आंसर क्या होगा, ई, ठीक है। सो आपका सी ई, ठीक है, CEE ये अभी तक, अच्छा ओके सॉरी, आंसर्स भी आपको मिल गया, ठीक है। सो सी आपका ई और ई, ठीक है। बाकी ये दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। द टर्म EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम लोग बोलते हैं EFT मींस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, विच वन ऑफ द फॉर, अच्छा ओके ये क्वेश्चन यही था क्या, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। सो सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, सेटलमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम इन विच processing and final payment of funds transfer instructions take place continuously is called, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका RTGS, ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियाज पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार, इंडिया इज कैटेगराइज एज अ लीडर और स्ट्रॉन्ग in more than 50% of indicator for the benchmark report। अभी ये देखो, ये तो मतलब अभी भी आपका है, ठीक है। सो जो ऑनलाइन पेमेंट से अदर्स है, उसमें अगर हम लोग देते हैं, इफ यू गिव रेफरेंसेस ऑफ यूपीआई एंड अदर्स आल्सो, ठीक है। सो इंडिया इज in leadership position in large payment system and fast payment system। India is weak on certain indicators such as ATM and POS terminals, ठीक है। सो अब ये आपका ऑल ऑफ द अबव बोल रहे हैं, ठीक है। सो लाइक दिस पॉइंट इज आल्सो आई गेस कि अभी इसमें इंप्रूवमेंट्स होगा, ठीक है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। सो बट इन्होंने आंसर आपका क्या दिया, डी आपका दिया हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन।
सो दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर में आपका ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था बेस्ड ऑन एआई। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है एआई के बारे में, बताओ। आज ही दिशा मैम ने आपको मॉड्यूल बी के जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर सेशन कराया था, ठीक है। आई होप यू गाइस हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? who was the founder of AI, artificial intelligence, ठीक है। So the who coined the term artificial intelligence and was one of the founder of the discipline of AI, ठीक है। तो किसके द्वारा आपका ये दिया गया था, ठीक है। So what will be your correct answer? पारसर सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ठीक है। So John McCarthy will be right answer for this one. This was the right exact question in your last area, ठीक है, जहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। So John McCarthy coined the term artificial intelligence in 1955 at the Dartmouth Summer Research Project, okay, on artificial intelligence. He was also one of the founder of the discipline of AI along with Alan Turing. इसके अलावा मार्विन मिन्स्की एंड हर्बर्ट साइमन, ठीक है। इनके नाम थोड़ा सा याद रखने का, एक दो बार मतलब पढ़ के जाएगा, ठीक है। McCarthy was a visionary leader in the field of AI. He believed that AI had the potential of revolutionize many aspects of our life, जैसा आज के डेट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। Everything is AI driven nowadays, ठीक है। Next one, which bank introduced fingerprint authentication and touch ID for its customers in 2015 for the very first time, ठीक है। जैसे फिंगरप्रिंट वाला होता है ना, लाइक नाउ इट इज, जैसे मोबाइल या अदर्स इनमें तो होता ही है, ठीक है। अदर्स वहां पे भी जैसे आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है किसी भी बैंक का, सो यू कैन सेट योर फिंगरप्रिंट एज योर पासवर्ड एज योर फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो जो बैंक का पासवर्ड होता है इन अदर्स होता है, सो वी कैन सेट तो कि अगर हम मतलब जो भी पर्सन का वो अकाउंट है अगर वो फिंगरप्रिंट से करेंगे सो दैट अकाउंट विल लॉग इन, ठीक है। तो वो लॉग इन करने में आपका या सिक्योरिटी या ट्रांसफर से अदर्स उसमें यूज होगा। सो दिस वाज आपका ये जो फिंगरप्रिंट्स वाला जो इनोवेशन था, ये किसके द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लेके आया गया था? सो आंसर इज बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो बैंक ऑफ अमेरिका will be right answer for this particular question. So Bank of America introduced fingerprint authentication and touch ID for its customers. This innovation allow customer to use their fingerprint to authenticate and access their account, enhancing the security and convenience of banking transactions. So please do remember this. Next one. Okay, so why AI is important here? Why AI, artificial intelligence in banking industry? तो अगर हम इसकी बात करते हैं benefits of AI and others, ठीक है, तो क्या क्या होगा आपका? Enormous challenges in banking sector, इनको solve करने में thrust for process driven orientation, ठीक है, initiate self service in branches, like this is one of the लाइक ये सबसे बड़ा फीचर हम इस मतलब जितने भी फीचर्स हैं उनमें सबसे बड़ा फीचर्स है। जैसे हमारा चैट बोर्ड होता है ना ब्रांच में, जैसे मतलब हमारे बैंक की वेबसाइट पे जो चैटबॉट होता है, ठीक है, तो वो कई कस्टमर्स की क्वेरीज तो वैसे ही सॉल्व कर देता है। जैसे अगर कस्टमर को पूछना है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स या प्रोसेस या इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स, एफडी या अदर्स, ये सारी जो बेसिक बेसिक क्वेरीज हैं दैट कैन बी हैंडल थ्रू दिस पर्टिकुलर, जो मतलब आपका जेनरिक क्वेरीज और फ्रीक्वेंट क्वेरीज होती हैं कस्टमर्स के लिए। कस्टमर डिजायर टू डिलीवर डिफरेंट पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी मिल सकते हैं। बिल्ड फंक्शनल एफिशिएंसीज, एस्केलेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा टू सपोर्ट फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, विजुअलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन फंक्शंस विद द यूज ऑफ रोबोटिक टूल्स, to minimize the chances of fraud and scam, manage an immense volume of data at record speed and gain valuable insight, ठीक है। तो डेटा का इंटरप्रिटेशन और आपका बेस्ड ऑन दैट डेटा ड्रिवन डिसीजंस, तो जहां पे अगेन काफी ज्यादा यूज होता है टू कैरी आउट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आपका, ठीक है। तो ये आपके जो फीचर्स एआई का या यूजेस ऑफ एआई इन बैंकिंग सिस्टम बोलो या फिर बेनिफिट्स ऑफ एआई इन बैंकिंग सिस्टम बोलो, तो इनके सराउंडिंग भी आपका जैसे स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ एनईएफटी सिस्टम, बताओ, ठीक है, जल्दी से बताइए, तो आप लोगों का बिल्कुल एक्सपर्टीज है इसमें। हालांकि आज के डेट में लाइक आफ्टर दिस लाइक स्पेशली पोस्ट कोविड, तो दिस ऑफलाइन
जो NEFT RTGS है उनके नंबर्स दे डिक्रीज ड्रास्टिकली, राइट। सो अब सब लोग आपका ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, सब लोग मतलब कस्टमर, ठीक है। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑन ऑल डेज, बिल्कुल है, ठीक है। near real time fund transfer to the beneficiary account and settlement in a secure manner, pan India coverage through a large network of branches of all type of banks, ठीक है। So all of the above will be right answer for this particular one, ठीक है। So NEFT offer the following advantages again based on your Macmillan book itself, ठीक है। So round the clock, near real time, ठीक है। So RTGS is always known for the real time settlement। अब यहाँ पे ना इन्होंने ये वर्ड लगाया है near real time, ठीक है। So usually NEFT के transactions भी आज के डेट में जैसे their settlement time is on like that is scheduled in batches and there are 48 batches in 24 hours, हाफ आवर्ली बेसिस पे चलते हैं। बट अगर मैं जैसे दो कस्टमर्स के बीच में NEFT ट्रांजेक्शन हो रहा है, सो इट हार्डली टेक 1 मिनट और आपका 30 सेकंड 45 सेकंड जितना भी वो ट्रांजेक्शन का टाइम आपका होता है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस पर्टिकुलर टर्म। पैन इंडिया कवरेज आपका है, ठीक है। The beneficiary need not visit bank branches for the depositing the paper instruments and others. Remitter can initiate the remittances from his or her home itself. ठीक है, next one. NEFT offer the following. इसके अलावा कुछ और positive confirmation to the remitter by SMS or email on credit or to the beneficiary account, ठीक है। तो जैसे अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इमीडिएट मैसेजिंग आपके रहती है। penal interest provision for delay in credit or return on transactions, ठीक है। तो अगर कोई आपका जैसे बैंक के ऊपर भी इवन देयर आर लाइक द टर्न अराउंड टाइम इज मैक्सिमम 24 आवर्स, अगर उसमें अगर ट्रांजेक्शन नहीं सेटल हो रहा है तो इट शुड बी बाउंस बैक, ठीक है। मतलब जो सेंडर है उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, अगर नहीं होगा तो देयर विल बी चार्जेस। नो लिवाई ऑन चार्जेस बाय RBI फ्रॉम बैंक, ठीक है। अगर ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, नो चार्जेस टू सेविंग अकाउंट्स कस्टमर फॉर online NEFT transaction, the transaction charges have been capped by the RBI in case of offline itself, ठीक है। अगर ऑफलाइन में है भी तो वो आपका कैप्ड है, ठीक है। अगला है हमारे पास AEPS, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आई होप यू हर्ड अबाउट दिस, ठीक है। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। AEPS is a bank led model that facilitate dash financial transaction at point of sale or micro ATMs using dash authentications, ठीक है। बताओ क्या होगा। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये लिंक है किसके साथ, आपका आधार के साथ, ठीक है। सो इट इज एन ऑनलाइन आपका आधार इनेबल आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड, ठीक है। तो ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन, तो पहला ही क्या होगा आपका, ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो AEPS is a bank led model that allow online inter operatable financial transaction at POS. This like ATM using the Aadhaar authentication, ठीक है। So Aadhaar authentication means आधार लिंक पे आपका जो OTP वाला केस होता है, this means that transaction can be conducted in real time through the internet and authentication is done using Aadhaar biometric or demographic data also, ठीक है। Next one, the Indian Banking Community Cloud IBCC, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑड होगा आपके लीक से, ठीक है। So enable service several bank to share infrastructure while tracking common issues such as security and compliances. What type of cloud development would be the most appropriate for this particular scenario, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम लोग एक कॉमन जो क्लाउड सिस्टम आपका है उसको यूज कर रहे होते हैं टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, या अगर ऐसे कोई भी चैलेंजेस उनके लिए, दैट इज जनरली नोन एज, क्या बोलते हैं इसको आपका, विघ्नेश्वरी मैम बताइए, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, पारस सर। एंड गाइस बाकी के दोस्त लोग कहाँ हैं सब, दिवाली अभी भी चल रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। पीपल आर स्टिल सेलिब्रेटिंग लाइक स्टिल इन फेस्टिवल मोड, ठीक है। तो आपका अभी भी वो सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो from tomorrow onwards, like tomorrow we'll talk about the module C and day after tomorrow module D. Then just after module D, we'll again start with the mixed question based on module A, B, C, D. ठीक है। Right now what we are doing basically we are practicing things unit by unit, ठीक है। अभी हम लोगों का जो practice चल रहा है that is one unit, another unit, another unit. Then आपका module का एक compilation kind of, so we'll have mixed question, mock test and others. Disha ma'am will also start taking the session, ठीक है। मतलब जो फन आफ्टर कंप्लीटिंग द फंडामेंटल थिंग्स और समरी थिंग्स विल स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट आल्सो, राइट। चलो तो क्या होगा आपका, कम्युनिटी क्लाउड विल बी द हेल्पफुल इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो कम्युनिटी क्लाउड विच इज जनरली हेल्प टू फेस कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय द
अ ग्रुप ऑफ बैंक्स आपका, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए। अ कम्युनिटी, प्लीज गो थ्रू दिस वन, ठीक है, एक बार रीड करो। अ कम्युनिटी क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी of organization with common concern team. This can be a group of businesses, government agencies, or other organizations. The cloud infrastructure is typically managed by third party provider, जैसे हमारे यहाँ पे TCS या Infosys करता है, ठीक है, but the community may have some control over the services and feature that are offered. IBCC is a community cloud that is specifically designed for the banking and financial service industry. It allows banks to share infrastructure and resources while also addressing common concerns like security compliances. This can help bank to reduce cost, improving efficiency, as well as increase the increase agility, right? So these are the benefits of this. So sorry, next one. Next question, guys. Which fundamental cloud service model would be the most appropriate for Indian banking? Indian banks looking for build and deploy their own banking application on shared cloud infrastructure. ठीक है? So they say like every bank they have their own applications, but if they want to develop it on shared cloud infrastructure, सो कौन सा आपका रहेगा, ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस विल बी द मोस्ट सुटेबल इन दिस पर्टिकुलर केस आपका, सो सी विल बी करेक्ट आंसर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल that provide access to fundamental computing resources such as processing, storage, and networking. Infrastructure as a service provides the building block for cloud-based application and services, but it does not provide any configured software or services. This means the that organization that use infrastructure as service have complete control over the operating system, middleware, and application that they run on the cloud infrastructure. In the case of the IBCC, bank can use infrastructure as service to host their own banking software on the cloud infrastructure. This gives them the flexibility to choose the operating system, middleware, and application that they likely need, and to customize their cloud environment to meet their regular requirements also. तो ये कुछ एरियाज हैं, आई विल सजेस्ट कि आप इनको थोड़ा रिवाइज भी कीजिएगा. जो टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब आईटी वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, ठीक है, बट हाँ जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा, जैसे मैं हूँ एक उनमें से, ठीक है, तो आप थोड़ा सा लाइक मतलब टेंशन नहीं लेना है इसके लिए. इफ वो आपको कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं पूछने वाला, बेसिक बेसिक चीजों को भी अगर आप पढ़ेंगे सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है. What type of loan required the borrower to repay the entire loan amount along with interest in a single payment at the end of the loan terms? क्या बोलते हैं इसको बताओ. ये तो हमने AFM में भी पढ़ा था, ठीक है. AFM वर्किंग कैपिटल वाला जो एरिया था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था. इट इज नोन एज बलून पेमेंट, ठीक है. सो इट इज कॉल्ड सॉरी इट इज नोन एज बुलेट पेमेंट, सॉरी, ठीक है, नॉट बलून पेमेंट, इट इज नोन एज बुलेट पेमेंट. ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट, हाँ बिल्कुल 100% राइट विघ्नेश्वरी मैम, ठीक है. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. In the context of AI-based fraud detection in retail banking, why it is important to use rejected notifications as signals. ठीक है. तो अब देखो क्या होता है ना, जैसे AI ड्रिवन हम लोग कोई भी चीज आपका चला रहे हैं, AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन आपका जो, जैसे वी हैव अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शंस. ठीक है. तो इफ देयर आर सम, जैसे कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, सो AI विल जनरेट सम काइंड ऑफ आपका जैसे जो नोटिफिकेशंस आपके आएंगे, जैसे रिजेक्ट किया गया ट्रांजैक्शंस को इन अदर्स. ठीक है. सो लाइक लेट्स से if आई एम यूजिंग इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स or if someone is using my credentials to access my accounts, ठीक है, तो अगर वो wrong credentials आपका डालेगा, so it will generate there will be a rejection from the AI side, and कहीं ना कहीं इससे क्या होगा आपका, अगर ऐसी चीजें आएंगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें आएंगी, so it will help us कि हाँ उस सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ पे क्या चीज है,
और मतलब एरियाज को आइडेंटिफाई करने में आपको पोटेंशियल एरियाज वी कैन से, ठीक है। सो रिजेक्ट नोटिफिकेशन ट्रिगर ऑटोमेटिक अकाउंट फ्रीज, नो रिजेक्ट हाइट क्या है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई डिटेक्शन रिटेल बैंकिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज रिजेक्टेड नोटिफिकेशन एज सिग्नल्स। रिजेक्टेड नोटिफिकेशन ट्रिगर ऑटोमेटिक अकाउंट फ्रीजेस। Rejected notification indicate fraudulent transaction, it can be rejected notification help improve the accuracy of the algorithm, ठीक है। it can be rejected notification result in immediate customer communication। देखो these all are true about this particular one, but I'll go with this one, ठीक है। देखो ये एक मतलब these are the kind of the conclusion, ये आपके जो दोनों एरियाज या तीसरा भी आपका है, ठीक है। सो बट अगर हम लोग हमें अगर अपने सिस्टम को और ज्यादा हेल्प करना है ना, सो रिजेक्टेड नोटिफिकेशन हेल्प इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, हमारा जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है वो उसका एक्यूरेसी भी आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। मे बी वो डायरेक्टली आपका फ्रीज ना करे, जैसे कस्टमर के द्वारा खुद से गलती हुई है ना अदर्स, तो दिस इज द एंड वन आपका जो आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बट हाँ विद दिस अगर हमें एआई को टेस्ट करना है सो दिस विल बी द हेल्पफुल कि हाँ जो हमने सिस्टम डेवलप किया है वो सही है या नहीं है, दैट इज द वन, ठीक है। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे डिटेल में। So, in the context of AI-based fraud detection in retail banking, rejected notifications are notifications that are sent to customers but are not acted upon by the customers. These notifications can be for a variety of reasons, such as customer not recognizing the transactions, or customer not having access to their mobile devices, or the customer simply ignoring the notifications. Rejected notification can be used to improve the accuracy of the AI algorithm by providing feedback on the algorithm performance also, right? Next one. What is the key distinction between artificial intelligence and automation, ठीक है। तो ऑटोमेशन में हमारे जो जैसे फिनिकल इज ऑटोमेशन बेस्ड है, ठीक है, या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द टीसीएस सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब इन्फोसिस का फिनिकल है, मोस्ट ऑफ में वो चलता है, ठीक है। बैंकर्स आपका बैंकर्स इज बाय टीसीएस आपका, ठीक है। सो दीज ऑल सॉफ्टवेयर दे जनरली वर्क ऑन ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेशन इज लाइक बेसिकली जैसे आपने एक कस्टमर आपका जिसका अकाउंट क्रेडिट किया बाय 10,000 से, ठीक है, सपोज दैट कस्टमर डिपॉजिटेड 10,000 इन हिज अकाउंट, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम सिर्फ एक एंट्री करते हैं, उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं 10,000 से। रेस्ट थिंग्स आर बेसिकली ऑटो ड्रिवन, ठीक है, मतलब उसका जो ओवरऑल बैलेंस है या हमारे पास जो सेविंग अकाउंट्स का ओवरऑल बैलेंस है, सो वो अपने आप से हम हर जगह जाके एंट्री नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज ड्रिवन बाय द ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो कहीं ना कहीं एक जो ह्यूमन आपके जो बेसिक जैसे हमारी जो कॉमन क्वेरीज होती हैं कस्टमर्स की, उन क्वेरीज को मतलब एक जनरल प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ जहां पे जो कॉमन क्वेरीज हैं दे आर जनरली टेकन केयर बाय दिस, ठीक है। सो विघ्नेश्वरी मैम इज सेइंग सी, पारस सर इज सेइंग सी, कमल सर इज सेइंग सी। सो एक बार पढ़ लेते हैं। एआई यूज कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस टू टेक ओवर प्रोसेस वेयर इज ऑटोमेशन सी का मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। अपोजिट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस इज शुड बी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। एआई मतलब AI and automation are synonyms, no. AI focus on making machine intelligence and capable of imitating human behaviors, बिल्कुल सही, while the automation involve enabling software or hardware to perform tasks without human interventions, ठीक है, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। So what will be your correct answer? C will be right answer। जैसा हमने एग्जांपल लिया that credit transaction of 10,000 rupees, और आपका the general query which is raised by the customer about the इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स, ठीक है, जैसा हमारे बैंक का इंटरेस्ट अकाउंट, तो जो जनरल क्वेरीज हैं दे आर जनरली हमने उनको फीड किया हुआ है किसमें आपका जो हमारे एआई की जो क्वेरीज है उनके अंदर, ठीक है। सो एआई एंड ऑटोमेशन बोथ आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। सो एआई एम टू क्रिएट मशीन दैट कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। दिस involve developing machine that can understand and respond to their environment, learn from experiences and make decisions. Automation aim to create machine that can perform specific tasks efficiently and reliably. This involve developing machines that can follow a set of instructions without human intervention। जैसे आपका एक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, दैट मीन्स आगे आपको ये क्रेडिट करने हैं, इनका बैलेंस इंक्रीज करना है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस। नेक्स्ट वन गाइस, what are the advantages of implementing artificial intelligence
टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो बताओ ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। अभी मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे इसके। So what will be your correct answer, guys? Okay. So AI technology decrease the independence. Sorry, AI technology decrease the dependence on digital wallet or for the pay. No, at the technology remove the need for customer support service. Okay. AI technology remove the need for customer support services. AI technology enable customer to access banking services solely through the branch location. AI technology offer personalized finance services, voice assistance, and data-driven lending decisions. ठीक है, so I'll go with option D. AI technology offer personalized finance services. ठीक है, जैसे जिसको जो requirements है उस हिसाब से वो उसको drive कर सकता है। ठीक है, voice assistance is also available nowadays. ठीक है, and data-driven lending decision आपका जैसे होता है ना, आपका जैसे जो आपके जो होम लोन्स या जो when we do the cross selling things, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो existing database है वहां से आपका जो मास डेटा हमारे पास है उनका इस्तेमाल करते हो, तो डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, सो पर्सनलाइज्ड फाइनेंस सर्विसेज एआई can be used to analyze customer data to provide personalized financial advices and recommendations. ठीक है, voice assistant AI can be used to create voice activated banking services that make it easier for customers to interact with their banks, ठीक है, even in multiple languages. Data driven lending decisions, AI can be used for analyze large amount of data to make more informed lending decisions. ठीक है, next one, what is the nature of the principal and interest component in EMI, equated monthly installment, throughout the रीपेमेंट पीरियड? ठीक है, तो आपका कैसे होता है ईएमआई का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिवीजन है। ठीक है, सो जैसे सपोज दैट देयर इज अ कस्टमर जिसने आपका कोई लोन लिया एंड ईएमआई इज सपोज दैट आपका 50,000, ठीक है, एंड दिस इज द टेन्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन इज सपोज दैट 12 EMI, ठीक है, 12 EMI है। ठीक है, सो हाउ वी जनरली कवर, जैसे ओवरऑल आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज सपोज दैट 12 है, कितना हो गया 6 लाख, ठीक है, 6 लाख आपका, ठीक है, 6 लाख। तो अब कैसे होगा, हम लोग कैसे करते हैं, इस 6 लाख में से आउट ऑफ द 6 लाख सपोज दैट आपका 5 लाख इज प्रिंसिपल एंड 1 लाख इज इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो जब हम लोग ईएमआई का आपका जो रिकवरी होता है, लोन का रिकवरी होता है, ठीक है, सो हम लोग कैसे बनाते हैं, आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, सो इनिशियली व्हाट वी डू, जैसे इनिशियल एरियाज में आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट होगा, जैसे 80% आपका वी आर रिकवरिंग दिस एंड 20% आपका प्रिंसिपल, मींस आपका ये जो 50,000 है इसमें मैक्सिमम पोर्शन आपका 80% का रिकवरी हो रहा है, किसका, इंटरेस्ट का, एंड आपका 20% आपका प्रिंसिपल का। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक समय के बाद वंस विल रिकवर दिस एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट जो बैंक की अर्निंग है, देन विल रिकवर द प्रिंसिपल ओनली। तो इस तरीके से जो आपका बेसिस डिसाइड होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सुटेबल आंसर फॉर दिस वन, द प्रिंसिपल कंपोनेंट स्टे द सेम while the interest component decline, no, ठीक है, रिवर्स होना चाहिए था तब ठीक था। both the principal and interest component rise, no, the principal component increase whereas the interest component decreased। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, व्हाट यू से अबाउट दिस गाइस, बोथ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट कंपोनेंट डिक्रीज प्रोपोर्शनली। ठीक है, देखो प्रोपोर्शन मींस आपका 50-50 वाला थिंग्स वी आर नॉट यूजिंग, आई विल गो विद ऑप्शन सी, व्हाई, द प्रिंसिपल कंपोनेंट इंक्रीज। देखो क्या हो रहा है आपका, जैसे आफ्टर अ सर्टेन टाइम ना, जैसे हमने इसको रिड्यूसिंग डिक्लाइनिंग बेसिस पे आपका रखा है, ठीक है, वंस जैसे आपका सपोज दैट आउट ऑफ दिस 50,000 40,000 was your principal interest and 10,000 was this। ठीक है, next time it becomes suppose that 35,000 it become 15,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज मतलब योर प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग। तो सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, राइट। अच्छा, अंडरस्टूड गाइस, ये समझ में आया लॉजिकली, आपको क्लियर है सबको, हाँ है ना, पारस सर, विघ्नेश्वरी मैम एंड अदर्स आल्सो, ठीक है, जिन्होंने भी डी आपका लिखा है। व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, इज दिस क्लियर, यस और नो? अगर एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, तो टोटल मंथली remain same throughout the loan terms, but the breakdown of EMI will remain same 50,000, but जो ब्रेकडाउन है आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का वो चेंज होता रहता है। ठीक है,
In the early months of the loan, majority of the payment is interest. The only a small portion is going toward the principal. As the loan progress, the principal component of the payment increase while the EMI interest component will decrease. और एक समय आएगा interest is zero, only we are charging the principal things. Okay, so I hope this, Vigneshwari ma'am, you got this particular thing. The total amount of interest paid over the life of an EMI loan depend on the interest rate, the loan terms and others. ये तो आपका basic story जो है, ठीक है पारस sir, I hope this is clear. Right, next one. Which of the following situation can be classified as willful default in the context of lending? ठीक है, so willful default, intentional, ठीक है आपका intentional, ठीक है. So NPA आपका recovery and all, ठीक है. So intentional, willful default. So what will be your correct answer, guys? क्या होगा correct answer? So a borrower experiencing financial difficulties who cannot repay their loan, a borrower who miss a loan payments due to an honest mistake in their financial record, a borrower who is deliberately used loan funds for a personal purpose contrary to the loan intended use, a borrower requesting an extension on their loan payments in this. So what will be your correct answer? Yes, what will be your right answer for this one? A borrower who deliberately used the loan funds for the personal other than the, like it is also known as chiffoning of funds, diversion of funds and all, right? So C will be right answer for this one. Okay? So willful default refer to the deliberate and intentional failure on the part of the borrowers to repay their loans despite having capacity to do so. So this, if you talk about the right answers, to where the borrower intentionally misusing the loan funds for the personal purpose. So this is the one, right? Next one. Okay. There are a few questions based on your Macmillan book. So we'll quickly go through these particular questions. Okay. So default in repayment in credit cards and personal loan segments is mainly due to, किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है आपका genuine default due to a reason beyond the borrower's control, ठीक है पहला. willful default where the default is intentional, ठीक है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है any one of the both of the above, ठीक है तो आपका D will be right answer. Recovery of loan through लोक अदालत can be resorted by bank up to a limit of, ठीक है. I hope you guys have gone through this particular part, ठीक है, in your PPB portion. तो मैंने ये include नहीं किया था intentionally, but हाँ, when we'll do the final marathon module wise, I'll definitely include question based on DRT, DRAT, SURFACE, ठीक है. ये आप लोगों ने पढ़े हैं ना, सब लोगों ने, ठीक है. So DRT, DRAT, SURFACE, I'll include the question in the later sessions जब हम लोग आपका मैराथन करेंगे. अभी हम यूनिट वाइज आपका जा रहे हैं, मिक्स मैराथन में आई डेफिनेटली इंक्लूड, बट पीपीबी के अंदर भी काफी ज्यादा डिटेल में है, ठीक है. सो व्हाट इज द लिमिट, क्या होगा आंसर आपका 20 lakhs, ठीक है. सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. द टर्म एंड कंडीशन फॉर repossession as per the recovery policy should contain the following provision, ठीक है. सो रिकवरी पॉलिसी के संबंध में आपका जो टर्म एंड कंडीशंस है, नोटिस पीरियड बिफोर टेकिंग द पोजीशन, ठीक है. बिल्कुल सही, ठीक है. सो जैसे आपका कोई आपका डिफॉल्ट है होम लोन पे या कार लोन पे आता है, तो फर्स्ट वी हैव टू एज अ बैंक वी हैव टू सेंड नोटिस टू द कस्टमर, ठीक है. सर्कमटेंसेस अंडर विच द नोटिस पीरियड कैन बी वेव्ड, ठीक है. किन सिचुएशन में हम इसको हटाएंगे. the procedure for taking possession of the security, ठीक है. Again this a provision regarding a final chance to be given to the borrowers for repayment of loan before the sale auction of the property, ठीक है. So these all are generally part of this particular process. Next one, what is the objective behind recovery process, ठीक है. What is the objective behind recovery process? Increasing number of corporate loans, increasing NPA, reducing NPA, ठीक है, reducing number of, हाँ, so option C will be right answer for this one, ठीक है. So सारे आंसर करेक्ट हैं आई गेस. एक बार देख लेते हैं पहले का. ओके, एनी वन ऑफ द अबव, बोथ द अबव, ठीक है. अच्छा ओके, हाँ तो यहाँ सी है, मतलब ये आई डोंट नो हाउ दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट. अच्छा ओके, हाँ दोनों में से कोई एक आपका हो सकता है, करेक्ट है. बहुत स्मार्ट क्वेश्चन बनाया, ठीक है, छोटा सा. दूसरे का सी आपका करेक्ट है, तीसरे का ई एंड चौथे का आपका सी, ठीक है. सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस. चलो नेक्स्ट, नाउ विल एंटर इन द नेक्स्ट सेशन. व्हाट इज द प्राइमरी purpose of MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेसेस
और इन बैंक्स? बताइए, MIS का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? MIS is very important tool in our banking business or in any business basically, ठीक है? So it generally send alerts on our prerequisite things, जो भी हमने उसमें इंस्ट्रक्शन आपके दिए हैं, ठीक है? ये आपको सेल्स के बारे में बताता है, हर चीज आपका मतलब जो भी मतलब दैट एंटायर कंपाइल्ड डेटा इज जनरली पार्ट ऑफ योर MIS सिस्टम, ठीक है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक इंफॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है? तो ये सिस्टम का इफेक्टिव होना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है? सो टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, टू एस्टेब्लिश concentrate decision for the concrete decision for the business, to act as guidelines for the business, ठीक है? To set policies and others. तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है? टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है? ये सही है ना, इसमें कोई तो दुराई नहीं है। अशोक सर, गेमर सर एंड अदर्स, आई होप यू हैव नॉट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन का आंसर आपने किया है, इसका आपका देखो गाइडलाइंस एंड बिजनेस ओनर्स नहीं, ये क्या होगा आपका? टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन सो वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इट कैन बी अबाउट alert about your NPS or it can be about the potential customers and all, right? So the primary purpose of MIS in business is to provide timely and relevant information to managers and decision makers. MIS use systematic tools to collect, process and present data in a format that assist managers in making informed decisions. The information provided by MIS serve as foundation for managers to establish concentrate decision and formulate managerial policies and regulations, ठीक है? नेक्स्ट वन, MIS का यूजेस अगर हम लोग देखें, ठीक है, थोड़ा सा इसको, सो डिजाइनिंग MIS फॉर बैंक, ठीक है? सो the point to be taken care of while designing an MIS system will differ for bank to bank depending upon goal and objective, quality of staff, technological development and customer segmentations, ठीक है? So many other factors also, ठीक है? Where the journal of the following is this, पहला customer database, ठीक है? The service expectations and perceptions resolve around the following factors. One is customer, individual, company या institution किसको हम सर्व करने जा रहे हैं, ठीक है? Operators, housewives, employees or the officers of the organization, range of services, ठीक है? Saving, credit checking, credit history and payment, others financial services, classes of customer, income group, corporate bodies, वर्किंग आवर्स, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो ये सारी चीजें हमें आपका मैनेज करते हैं, ठीक है? वी जनरली यूज ऑल लाइक दीज थिंग्स कैन बी मैनेज थ्रू योर MIS सिस्टम, ठीक है? बट फॉर दैट वन यू विल बी रिक्वायरिंग द डेटाबेस, ठीक है? इन सबका आपका डेटाबेस यू हैव टू इनपुट इन योर सिस्टम, ठीक है? सर्विस टू अकाउंट होल्डर्स, तो ये तो आपका इंटरनल यूज हो गया फॉर द बैंक पर्पस, ठीक है? जो हमारे बैंक का पर्पस है उसके लिए, ठीक है? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सर्विसेज टू द कस्टमर्स, so the customer account holders need constant advice on the status and operations, ठीक है? जैसे आपका किसने अकाउंट ओपनिंग का डाला रिक्वेस्ट या किसने विड्रॉ का रिक्वेस्ट डाला इन अदर्स, ठीक है? मोस्ट ऑफ द कस्टमर यूज देयर अकाउंट फॉर रूटीन पेमेंट्स affecting the balances. Many times the account holders hold a large amount and it not transacted for any purpose, ठीक है? So MIS should give following reports to the management. Non-moving accounts, ठीक है? आपका the account was having the balance of more than say 50,000, ठीक है? The account was going down below minimum balance, ठीक है? Regular payment not made, routine credit are not arrived, ठीक है? Default on loan, delays on credit check amounts, a sudden rise and fall in the account movements. The account holders were giving 80% business to take personal care of the service, expecting and perceptions, ठीक है? CRM representative, ठीक है? So मतलब ये जो different areas है, ठीक है? These are the different areas where we can use जहाँ पे हम लोग आपका कस्टमर्स का जो डेटाबेस मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए वी कैन लाइक ये एरियाज आपका जहाँ पे हम लोग अपने MIS का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ही आपको देखना पड़ेगा,
रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आई शेयर दिस पीडीएफ जस्ट आफ्टर दिस सेशन इटसेल्फ, ठीक है, तो जहां से आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। नेक्स्ट वन, द एचआर डिपार्टमेंट of an organization need to analyze the employee turnover rate and identify the main reason behind it, ठीक है। सो मतलब अच्छा आपका परफॉर्मेंस है या बुरा परफॉर्मेंस है और क्या उसके पीछे रीजन है। Which MIS component would be the most effective for this task, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, और आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और आपका नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट, कौन सा सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा? सो आई विल गो विद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। बेसिकली दे हैव टू मेक अ डिसीजन कि बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा, उस एम्प्लॉइज की जो ओवरऑल पूरे साल भर की जो परफॉर्मेंसेज हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द एमआईएस के डेटाबेस में है, ठीक है। सो दे विल यूज दैट डेटाबेस and they'll make decision based on that particular one, okay? So a decision, DSS is a computer based information system that help manager take decisions or make decision. It does this by providing manager with access to data and analytical tools. This allow managers to analyze data and identify patterns that may not be visible to the naked eyes. In this case, HR department, they can use this particular one. Next one, which of the following statement accurately describe transaction processing system TPS, transactions processing system TPS in an organization, ठीक है। So TPS are responsible for strategic decision making and long term no. TPS handle routine and repetitive transactions, ensuring accurate and real time processing. TPS is designed to manage intellectual property, बिल्कुल सही, and knowledge sharing among the employees. तो TPS का इस्तेमाल क्या होता है हमारे यहाँ पे आपका, ठीक है। हाँ, TPS is linked with knowledge sharing. So knowledge sharing है, intellectual property is part of this one. So option C will be right answer for this particular one, ठीक है। So TPS are the foundation, are the foundation of most information system in an organization. They are responsible for handling routine and repetitive transaction such as, okay, हमने कुछ गलत डायरेक्शन किया क्या, transactions such as order processing, inventory and this. TPS are not responsible for strategic decisions. Okay, TPS is ensure the data processing accurate. Okay, तो हमारा इसका आंसर हमें गलत करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन। अच्छा, ओके ओके, सॉरी गाइस, सो वी हैव टू करेक्ट दिस वन, ठीक है। हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। ट्रांजेक्शन रूटीन रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन, तो बी शुड बी राइट आंसर, हाँ, एज पर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हैंडलिंग रूटीन, अच्छा ओके, नॉलेज, केपीएस विल बी यूज फॉर द इंटेलेक्चुअल इन अदर्स, ठीक है। प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन कस्टमर सर्विस, हाँ, प्लीज डू करेक्ट दिस वन, हाँ, दिलीप सर आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ठीक है। TPS ensure that data is processed accurately and real time, which is essential for the smooth operation of an organization. TPS are not responsible for strategic decision making for long term planning. This is the role of other type of this DSS. आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। TCS is not designed to manage intellectual property. अच्छा हाँ, so for intellectual property and others we have KMS, ठीक है, that is नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। प्लीज डू करेक्ट दिस वन। तो अब थोड़ा सा आपका टीपीएस रेगुलर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। दूसरा आपका KMS इज बेसिकली शेयर्ड नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड DSS फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये तीनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, वैसे इजी था आपका ये, हमने नाम से इसको समझ जाना चाहिए था। आई डोंट नो हाई कि मेरे को क्यों याद रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ABC Bank is facing a high number of customer complaints regarding the time taking to resolve their dispute or complaints. Customers are dissatisfied with the long processing time, which is affecting the bank reputation and customer loyalty. How can MIS help ABC Bank to in resolving the issue of long processing time for the customer dispute, ठीक है। So by providing tax consulting, no. By providing investment guidelines, no. By analyzing complex organizational data, identifying the problem opportunities and developing effective solution for the improving performance, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा by providing a counter service of paying small amount, no. तो क्या होना चाहिए आपका इसका आंसर? The most relevant will be option C आपका, ठीक है। So option C will be right answer. So MIS can help ABC Bank in analyzing the data
related to the customer dispute, identifying this. By developing effective solution based on the analysis, the bank can improve the performances and reduce the processing time also. Okay? So C will be right answer. Next one. Which of the following are the key performance indicator KPI that the MIS should track to help the management monitor account holders activities? Okay? Which of the following are the key performance indicator KPIs that MIS should track to help the management monitor account holders activities? ठीक है, तो किन किन बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं? बेसिकली अकाउंट एक्टिविटी रेशियो एंड एवरेज बैलेंस मैट्रिक्स कर सकते हैं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर एंड क्रॉस सेलिंग, डेलिक्वेंसी रेट एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कर सकते हैं. डिजिटल अडॉप्शन रेट एंड फ्रॉड डिटेक्शन रेट. ठीक है, तो सारे ही क्या होना चाहिए आपका आंसर? आपका ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस particular one. ठीक है, so these all are the basis for that particular one. ठीक है, next one. Which factor influence the point to be considered while designing an MIS for a bank? So whenever we designing an MIS system for bank, so which factor should be considered? Technological development बिल्कुल होना चाहिए. Number of bank branches, ठीक है, quality of staff, ठीक है, customer segmentation, availability of a coffee machine in branch. No, so this is not the one. ठीक है, so आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. ठीक है, technological development, number of bank branches, quality, quality can be part of this one. ठीक है, 1 2 3 and 4. ठीक है, so option C will be right answer for this particular one. ठीक है, next one. So technological development. ठीक है, so the bank MIS should be able to support the latest technological advancement such as cloud computing, artificial intelligence and big data analytics. ठीक है, this will allow the bank to collect, store and analyze the data more efficiently and effectively. Number of bank branches, ठीक है, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, customer segmentation, again quality of staff is the bank MIS should be easy to use and understand by its staff. This will ensure that the staff is enabled to use the MIS to its full potentials. ठीक है, जो आप लोग अगर इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे थे, दैट इज द वन. तो फिफ्थ वन इज नॉट द पॉइंट्स. ठीक है, जिसपे हम लोग इसको कवर अप करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली this is one some pointers. ठीक है, so issue related management information system. ठीक है, so जैसे आपका humanistic factors, the lack of understanding of the need of the user by designer. ठीक है, first thing, lack of information of managers and user as they don't know exactly what they want and what their information need are. ठीक है, मतलब पता ही नहीं क्या चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, दैट विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन मैनेजर्स एंड यूजर्स इन सिस्टम डिजाइन. ठीक है, बिकॉज दीज आर जनरली डिजाइन बाय दी सम थर्ड पार्टीज. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसके लिए हमें क्वालिटी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी. लैक ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा कलेक्शन. ठीक है, तो डेटाबेस हमने बनाया है बिकॉज दिस सिस्टम इज कंप्लीटली डेटा ड्रिवन. उसके बाद जैसा डेटा है वैसे वो आपको आउटपुट देगा और वैसे आपको वो सजेस्ट करेगा. ठीक है, तो अगर डेटा जो कलेक्शन है, इफ दैट विल बी पुअर, सो योर आउटकम विल बी आल्सो पुअर. ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर आपका. ठीक है, द लैक ऑफ प्रोसीजर एंड मेथोलॉजी एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिंग द सिस्टम. लैक ऑफ सुटेबल कंसल्टेंट्स ऑफ फॉर डिजाइनिंग दिस सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर. Lack of evaluation of environmental aspect in management information system. Lack of serious consideration and adequate investment in this particular regard. ठीक है, ये important है. So please do consider this as an important aspect. तो ये कई बार आपको पूछे जाते हैं ऐसे चीजें आपका. So you have to be very careful. ठीक है, organizational factors are also there. ठीक है, the lack of good condition for participation and collaboration of managers, user and system directors. Lack of existing system and method analysis before the system design. Lack of evaluation of the existing power. Bad condition of educating of the specialized forces. Unsuitable implementation of system. Inadequate education of the users and inadequate and
incomplete documentations. ठीक है, so these are some problems which or issues which me that MIS system may face at organization level. तो तीन major areas आपका humanistic errors, समथिंग रिलेटेड टू स्टाफ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट्स. ठीक है, सो प्लीज डू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. नेक्स्ट वन गाइस, what is the two stages process involved in securitization. ठीक है, so securitization में आपका दो stages कौन कौन से होते हैं, very basic one. ठीक है, so one is SPV. ठीक है, आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंड आपका अनदर वन इज रीपैकेजिंग और समथिंग. ठीक है, सो पूलिंग एंड सेलिंग एसेट टू थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स. ओके, सो दैट evaluation of credit worthiness and collateral valuation and issuance of trade debt securities, no, sale of asset to SPV बिल्कुल, and repackaging of third party investors. selling asset, हाँ, so option C will be right answer for this particular one. ठीक है, so please do care, like ये थोड़ा सा again important aspect है. The two stages process involved in securitization as follows. First one is there is the sale of a single asset or pooling and a sale of pool of asset to a SPV, special purpose vehicle, in return for the in return for an immediate cash payments. This involve transferring ownership of the asset to the SPV. Second one is the SPV repackage and sell the security interest representing claim on incoming cash flows from the asset or pool of asset to third party investors by issuing tradable debt securities. These debt securities are typically known as asset-backed securities and are backed by the cash flows generated by the underlying asset itself. ठीक है, नेक्स्ट वन MRR. अगेन सबसे एरिया आपका इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, हर बार पूछा जाता है आपका. ठीक है, MRR के ऊपर भी क्वेश्चन आपका. ठीक है, मिनिमम रिटेंशन रेशियो. In case of residential mortgage-backed securities, the MRR for the originator shall be what percent of the book value of the loan being securitized in respective of the original maturity. तो कितना है आपका? Basically, it is based on the time duration. If the timing is less than 24 months, so आपका less than 24 months, तो कितना होता है आपका mortgage-backed securities पे आपका 5%. And if it is more than 24 months आपका, ठीक है, so it is how much? 10%. ठीक है, this is the pointers. Please do remember these one. ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपका. So as per RBI guidelines, if the loan maturity overall आपका जो tenure है that is less than 24 months, so means 2 years, so it will be MRR rate will be 5%. and अगर आपका if it is more than 24 months, so it will be 10%. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, so minimum retention requirement for the originator shall be 5% of the book of the loan being securitized irrespective of the original maturity in the case of residential mortgage-backed securities. This is as per the master direction securitization of standard asset direction 21 issued by the RBI. ठीक है, 5% less than 24 months and 10% more than 24 months. ठीक है, next one. Which of the following statement is correct about residential mortgage-backed securities (RMBS)? So RMBS are securitization note issued by special purpose entity against underlying exposure that are all secured by the residential mortgage. पहला आपका correct है. RMBS is a security note issued by the special purpose entity against underlying exposure to the all secured commercial. नहीं आपका commercial and residential नहीं, only residential होना चाहिए. ठीक है, underlying security exposed secured by any time, no. So option A only will be right answer for this one. ठीक है, so RMBS residential mortgage back, they are generally backed by the residential mortgage only, right? Next one. So RMBS are securitization note issued by special purpose entity against underlying exposures that are all secured by residential mortgage. The purpose of issuing residential mortgage-backed securities is to provide a way of for lenders to raise more cash for reserve against which they can make more loans. RMBS investor include life insurance companies,
that benefit from an efficient way to invest billion of dollar in higher interest rate investments than government bonds or other areas. ठीक है. Next one, bad banks. What is one of the प्राइमरी बेनिफिट ऑफ बैड बैंक्स. ठीक है. सो बैड बैंक्स आपका जनरली क्या इसमें, ये हमने आपका किसी में तो पढ़ा भी था आई गेस, ये आई एन आई एफ एस में ही पढ़ा था ना. देयर वाज वन कंप्लीट यूनिट बेस्ड ऑन दिस वन. ठीक है. तो बैड बैंक्स का आपका इनको बनाने के पीछे दे आर सिमिलर टू ए आर सीज आपका. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट बैंक दे डू, मतलब इनिशियली आपका जैसे जो बना ए आर सी इंडिया लिमिटेड वाला जो था. ठीक है. सो जो बैंक्स हैं उनके बैड डेट्स आपका उनको शिफ्ट करना ए आर सीज के पास या बैड बैंक्स के पास. सो वी कैन हैव क्लीन बैलेंस शीट. जो बैंकों की बैलेंस शीट है उसको क्लीन करा जाए. ठीक है. सो इट इज लाइक 85-15%. सो 15% बैड बैंक विल पे टू द पेरेंट बैंक्स, बाकी आपका रिकवरी प्रोसेस पे रहता है. ठीक है. सो इंकरेज बैंक टू इन्वेस्ट इन रिस्कियर एसेट, नो. रिड्यूसिंग द नीड फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन, नो. easing the provision requirement and capital erosion for the bank आपका. So C will be right answer for this particular one. Correct है? Correct? चलो. So one of the main benefit of the bad bank is that it help elevate the provisioning requirement that bank need to meet due to non-performance assets. This is turn prevent capital erosion and allow bank to resume their नॉर्मल लैंडिंग एक्टिविटीज. बेसिकली उनके बैंक बैलेंस शीट को हम लोग क्लीन कर रहे होते हैं. what are the requirements and provisions related to the rating, valuation and investment in security receipt by ARCs. Rating, valuation and investment in security receipt by ARCs. ARCs are required to review the rating of security receipt twice in a year. जून एंड दिसंबर. बिल्कुल सही. ठीक है. जून एंड दिसंबर. प्लीज डू रिमेंबर दिस ना. ठीक है. रेटिंग एजेंसीज मस्ट डिस्क्लोज द रेशनल फॉर रेटिंग सिक्योरिटी रिसिप्ट यूजिंग द रिकवरी रेटिंग स्केल्स. ठीक है. ट्रू. बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप प्रोविजंस ऑन स्ट्रेस एसेट sold through securitization if their investment is such security receipt is over 50%. True. The threshold for bank to keep provision on stress asset sold through the securitization will be reduced to 10% from this. ठीक है. This is also correct I guess. ठीक है. तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही होने चाहिए. ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है. प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. ये पार्ट थोड़ा सा आप लोग गो थ्रू कीजिएगा. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है. तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करें. ठीक है. चलो. तो अच्छा क्वेश्चन क्या आंसर, एक्चुअली आई फॉरगेट दिस पार्ट. तो एक बार देख लेते हैं. Which of the following statement appropriate with respect to securitization process? The lender first select the asset they want to securitize to. The issuer, आपका special purpose vehicle, make payments to the lenders for the loan security. The asset are converted into a pool of security by the lenders for the purpose of issuing pass-through certificate. ठीक है. The pass-through certificate are sold to other investors who are willing to invest. So all of the above. पहला ये थोड़ा सा ना, मतलब देखो RBWM के जो मैकमिलन के क्वेश्चंस हैं दे आर मोस्ट सुटेबल. ठीक है. एग्जामिनेशन में विल सी क्वेश्चन अराउंड दीज पर्टिकुलर वन ओनली. ठीक है. अदर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, बट RBWM के अंदर आप यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. व्हाट डज सिक्योरिटाइजेशन मीन्स? इट इज आपका, अगर हम इसकी बात करें, पूलिंग इंडिविजुअल लोन एंड सेलिंग अ पैकेज. ठीक है. एज पर द आंसर. ठीक है. Securitization can be effected for standard asset, आपका rated account only, substandard. तो all होना चाहिए इसका आंसर. yes, so all है आपका. and RBI has since revised or reduced minimum holding period MHP for securitization. It is 12 months to 9 months. So from 12 months to 9 months ना. Question 4, no sorry, from 12 months to 6 months. ठीक है. Please do remember this one also, very important one. ठीक है. NARCL has been set up by, ये आपका किसका वो है, बेसिकली एजेंसी है आपका बैंक्स का. ठीक है. सो बाय बैंक्स इटसेल्फ. चलो. सो दिस इज इट गाइस. ठीक है. तो ये हमारा मॉड्यूल बी खत्म होता है. ठीक है. तो मॉड्यूल बी जिसमें हमने 3 सेशन किया, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स किए. ठीक है. सबसे बड़ा मॉड्यूल है और सबसे इंपॉर्टेंट भी. और सी मॉड्यूल छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है. ठीक है. तो विल ट्राई टू कवर अप, लाइक उसमें 5 और 6 यूनिट्स हैं. ठीक है. तो उनको हम लोग आपका
एक ही सेशन में आपका कवर करने की कोशिश करेंगे कल वाले उसमें। अगर दोबारा लगेगा भी, लाइक एक एक बार हमने जैसे यूनिट वाइज आपका कंक्लूजन किया है अभी तक, तो आपको यूनिट वाइज समरी भी मिल रही है, ठीक है, दिशा मैम की तरफ से, और यूनिट वाइज एमसीक्यूज प्लस कॉन्सेप्ट या जो भी एरियाज हैं वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लोग ये पूरा कर लेंगे भाई आपका ट्यूसडे, देन आपको वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, मतलब 8 तक हमारे पास टाइम है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में विल हैव प्रैक्टिस आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एरियाज हैं उनको हम लोग मतलब 4 5 6 7 8 3 डेज विल हैव, तो एक दिन में आपका 2 मॉड्यूल, और दूसरे साइड में आपका दिशा मैम विल आल्सो कंडक्ट सम मॉक टेस्ट और मिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम लोग करेंगे। आप लाइक फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो विल हैव 2 सेशन पर डे, एक आपका मॉड्यूल वाइज, दूसरा आपका मिक्स मॉक, ठीक है। तो दिशा मैम आपको मिक्स मॉक करेंगे और मैं आपको मॉड्यूल वाइज रिवीजन आपका हर एक मॉड्यूल के ऊपर जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं या किस टाइप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आई होप एवरीबडी एंजॉय द सेशन, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, हमारे लिए भी ये आपका नया है, ठीक है। तो लाइक जब मैंने ये पेपर दिया था तो आई फाउंड इट वेरी ईजी, ठीक है, बट हाँ जब हम लोग चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं समझते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। कुछ और चीज़ें जो हमने एग्जामिनेशन में देखी हैं और यहाँ जब उनको मैच करते हैं तो बहुत मतलब लाइक यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड ऑल, ठीक है। बट अगर आप इतना कुछ करके जाएंगे ना, बिलीव मी यू विल स्कोर वेरी गुड, ठीक है। 65 वाला जो टारगेट हमारा है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आप कल मिलेंगे। आई शेयर दिस पीडीएफ इन दिस टेलीग्राम ग्रुप, और इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो वेबसाइट में से या ऐप में से आप डायरेक्टली एक साथ अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, ठीक है। अगर आप आईफोन वाले हैं तो आपको टेलीग्राम से ही लेना पड़ेगा या वेबसाइट से आप ले सकते हैं, ठीक है। पारस सर 56 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 56 मार्क्स आराम से आ जाएंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। वी आर टारगेटिंग 65 प्लस, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट वीडियोज ऑल्सो, ठीक है। पारस सर आई पर्सनली सजेस्ट दोज वीडियोज, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज है ना दिशा मैम ने जो किए हैं, ठीक है, आप या तो वीडियो देख सकते हैं या फिर जो आपके जो पीडीएफ्स मैम ने शेयर किए हैं उन पीडीएफ्स को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक चीज मतलब पीपीबी और इस सब्जेक्ट में एक ही डिफरेंस है, लाइक दोनों ही एक जैसे हैं ऑलमोस्ट आपका। ये पीपीबी से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पीपीबी एक तो बहुत ज्यादा लैंडिंग है, टर्म इन कंडीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में ब्रांचेस में करते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस है। बट यहाँ पे ना जो हम डेली लाइफ ब्रांचेस में करते हैं और इसमें मतलब सिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। तो मतलब इसीलिए सबसे ज्यादा स्कोर आपका आरबीडब्ल्यूएम के अंदर ही होता है, ठीक है। तो बढ़िया से मतलब वो थोड़ा सा घुमाने के लिए केस बेस या अदर्स अप्लाइड क्वेश्चन या अदर्स ऐसा आपको दे सकते हैं, बट उसके लिए फाउंडेशन बहुत हेल्प करेगा, मतलब जो समरी वीडियोस में दैट इज मोर देन इनफ, तो वो आपको हेल्प कर जाएंगे। तो प्लीज अगर आप या तो आपका 1.5 या 2x में वो वीडियोस देख लें या फिर आपका नोट्स के थ्रू उनको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यूनिट वाइज वहाँ पे कंपाइलेशन है, तो वो सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है गाइस। चलो, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर कल मिलेंगे आपका, ठीक है। कल का टाइमिंग में थोड़ा सा कंफर्म कर दूंगा, सो किस टाइमिंग पे आई ट्राई कि आपका 5 PM के अराउंड या 6 PM के अराउंड हम लोग करें कल वाला सेशन, ठीक है। तो कल एक्चुअली मेरे को इवनिंग में मेरा एक और सेशन है, तो हम लोग अर्ली आपका सेशन करेंगे, ठीक है। किस टाइमिंग पे करेंगे आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है। अब मैं आपको आधे एक घंटे पहले शेयर कर दूंगा, ठीक है गाइस। चलो, तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। So this is it from my side. Thank you for joining this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Good night, guys. Thank you.